स्वागत करती हूँ मैं जयश्री श्रीनटोले साइकोलॉजिस्ट हूँ। इनसाइट ग्रुप की ओर से हम ये वेबिनार सीरीज ऑर्गेनाइज करते हैं। मेंटल हेल्थ फील्ड में काम करने वाले मान्यवरों को हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। आज के वेबिनार में हमने श्वेता जाम मैम को आमंत्रित किया है। हमारा पिछला जो वेबिनार था 20 सितंबर को, यही टॉपिक पे हमने श्वेता मैम ने हमें ओवर थिंकिंग पे ही वेबिनार पर मार्गदर्शन किया था। मैम रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट है और स्पेशल एजुकेटर भी है। इस क्षेत्र में उनका अनुभव लगभग 14 साल से भी ज्यादा है। मैम को मैं विनती करती हूँ कि आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन करे। हमारा जो आज का विषय है ओवर थिंकिंग, उस पर मार्गदर्शन करे। प्लीज मैम। Thank you, ma'am. And thanks for giving me this opportunity. Thank you very much. So everyone, today for this webinar, for this 1 hour, I don't want that only you just listen to me. I want the fully interaction with you all. So you can write on the chat whatever thoughts coming in your mind, whatever कुछ भी अगर आपके दिल पे आ रहा है आप लिख सकती हैं, जिससे मुझे भी ये चीज पता चलेगी कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ द थिंकिंग। ओवर है या नहीं है वो तो हम बॉर्डर लाइन बना देते हैं। तो एज वी स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, आई रियली वांट टू आस्क फ्रॉम ऑल द ऑडियंस, आपके हिसाब से ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है? Anybody who would like to type on the chat box, they can do that. ओवर थिंकिंग हम तब डिसाइड कर पाएंगे जब आपके हिसाब से आपका क्या मतलब होता है ओवर थिंकिंग का। बिकॉज हर किसी का देखने का नजरिया, हर किसी का उस चीज को समझने का नजरिया डिफरेंट होता है। तो इसी के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से ओवर थिंकिंग क्या होता है। Ma'am, answer if you can help me out. If some chat came, so do let me know. Okay, ma'am. Wait. अगर जब तक मुझे पता चलता है कि आपके हिसाब से ओवर थिंकिंग क्या है, बट लोगों के हिसाब से जितना मैं समझी हूँ, दे फील द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम दैट वरंट इवन देयर। मतलब ऐसी प्रॉब्लम जो है ही नहीं लेकिन हम सोच में बना लेते हैं। अगर आप सब ये चीज सोचते हैं तो इधर मैं थोड़ा सा आप सबके साथ थोड़ा सा डिफरेंट हूँ। बिकॉज हम सिर्फ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, ओवर थिंकिंग से हम अपनी प्लानिंग भी करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी ओवर थिंकिंग दो तरीके से होती है। एक होती है पॉजिटिव, जो हम सोच रहे हैं। मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास में बच्चा है 12th क्लास में, और मैं उससे पूछ रही हूँ बेटा क्या बनोगे, वो कहेगा मैम डॉक्टर बन जाऊंगा। अच्छा डॉक्टर, डॉक्टर में कौन सी स्ट्रीम लेना चाहोगे? कहेगा मैम सोचा नहीं। लेकिन अगर मैं उसको वहीं पे डॉक्टर पे आकर सीमित कर दूंगी तो वो आगे प्लान आउट नहीं कर पाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं डॉक्टर के फील्ड में या कोई भी फील्ड में बहुत सारी ब्रांचेस होती है। तो अब अगर मैंने कहा कि डॉक्टर बनना है, बच्चे ने कहा डॉक्टर बनना है, और उसी डॉक्टर को मैंने अगर उधर सीमित कर दिया, मैंने बच्चे से पूछा ही नहीं, तो बच्चे को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा। और वो सिर्फ हमें कैसे पता चलेगा एज अ काउंसलर कि वो पैशनेट है या नहीं है, या एज एन अ पेरेंट कि वो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है। आपने कहा क्या बनना है, किस बच्चे कहते हैं, ज्यादातर लड़के कहते हैं मैम क्रिकेटर बनना है। तो अब क्रिकेटर बनने के लिए चाहिए क्या, हमें कौन सी ट्रॉफी जीतनी है, हमें कैसे कैसे कौन से स्टेप जाने हैं, ये भी ओवर थिंकिंग है।
ऑन द अदर वे द सेकंड ओवर थिंकिंग इज जिसके अंदर हम अपने थॉट्स डेवलप कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ओवर थिंकिंग दो तरीके की होती है। एक जो थोड़ी सी पॉजिटिव वे में है, जो हमें एक गाइडेंस है, मार्गदर्शक हमें मार्ग बताए, हमें गूगल गूगल मैप जैसे आप सब यूज करते हैं। तो गूगल मैप में क्या है, हम अगर गूगल मैप में अपनी डेस्टिनेशन डाल दे तो हमें हर स्टेज आ जाती है कि ओके दिस स्टेज के बाद हमें लेफ्ट लेना है, राइट लेना है। सेम ओवर थिंकिंग हमारे लाइफ में इफेक्ट करती है। अब वो ओवर थिंकिंग आप कैसे लेते हैं, इसको एक प्रॉब्लम की तरह या इसको आप एक पॉजिटिव वे की तरह, वो आपको सोचना है। और आप रही बात जब हम आप सब इधर आए हैं ओवर थिंकिंग के वेबिनार में, तो दो चीजें हो सकती है। या तो आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, जो आप सब ट्राई कर चुके हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं और हम वो वीडियोस में डिफरेंट तरीके के टेक्निक यूज कर चुके हैं, बट फिर भी हमारी ओवर थिंकिंग जा नहीं रही है। या दूसरा हो सकता है कि ओके आप शायद नया कोई पर्सपेक्टिव सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर पहला वाला सिचुएशन है कि आप सब कुछ ट्राई करने के बाद भी उस ओवर थिंकिंग से निकले नहीं है, तो फिर मैं आपको एक चीज जरूर एडवाइस देना चाहूंगी। इस वेबिनार के पास आप 100% गारंटी है कि आप इस ओवर थिंकिंग से मूव आउट तो कर जाएंगे, बट हाँ, थोड़ी सी मेहनत आपके साथ आपको खुद करनी पड़ेगी, थोड़ा सा खुद को प्यार जो जरूरत है। जब हम फियर में होते हैं, टेंशन में होते हैं या वरी लेते हैं या कोई चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे होते हैं, तो तब हमारी वो ओवर थिंकिंग चैनलाइज होती है, दैट नेगेटिव ओवर थिंकिंग। पॉजिटिव ओवर थिंकिंग को कैसे कन्वर्ट करना है, क्या करना है, वो हम बाद में बात करेंगे अभी। तो अगर आप सब मेरे साथ एग्री हैं तो यू कैन टाइप यस ऑन द चैट बॉक्स। वेयर आप सब भी जानते हैं कि जब हम किसी चीज से डरे होते हैं, किसी चीज के लिए बहुत चिंता कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में उसके लिए ख्यालात आ जाते हैं और वो ख्यालात हमारे लिए नेगेटिव होते हैं। कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सब चीजें। तो अब जब हम इन चीजों के अंदर होते हैं और जब हम इसको सोचते हैं, तो वो हमारी ओवर थिंकिंग हमें चैनलाइज नहीं करती। वो ओवर थिंकिंग हमें एंजाइटी और हमारे अंदर डिस्ट्रेस भरती है। तो अगर आप सब इस चीज को मानते हैं और ये चीज सब जानते हैं कि ओवर थिंकिंग हमारे लिए बुरी है, फिर भी क्यों नहीं हम ओवर थिंकिंग छोड़ पाते, क्यों हम उस दलदल के अंदर हम रहना चाहते। कोई ये जरूर अगर बताना चाहे तो दे कैन राइट। सो डोंट वरी, अगर आपकी चैट अभी नहीं आंसर हो रही तो बाद में वी विल रीड इट एंड वी विल रिप्लाई टू यू। तो दैट इज बहुत जरूरत है आपको ये खुद पहले रियलाइज करने की कि मैं उस ओवर थिंकिंग से क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं उस गहरी सोच से क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ। इस सिचुएशन को साथ में आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी और ये ट्रू एग्जांपल है। एक दिन मॉर्निंग में एक लेडी थी जो मेरी बहुत प्रिय मित्र हैं। उन्होंने चाय पीते समय उन्होंने ऐसे ही बोला कि जो है ना, उन्होंने चाय पीते समय वो चिड़ियाओं का चहचहाना, चिड़ियाओं के चर्प्स, ये सब सब सुन रही थी एंड शी वाज रियली एंजॉयिंग इट। ऑल ऑफ सडन दैट थॉट केम कि क्या होगा अगर उस चिड़िया का वो घोंसला टूट गया तो? और वो उसके बाद वो इतने उस ख्यालों में वो पहुंच गई, वो उस ख्यालों में चली गई कि देखा ओहो घोंसला टूट जाएगा, बेचारी चिड़िया को फिर बनाना पड़ेगा, अगर घोंसले में अंडे होंगे तो अंडे भी टूट जाएंगे, बेचारी चिड़िया को कितना दुख होगा। और वो इस तरीके की कहानी को डेवलप करने लगे। एंड देन उनका टाइम हुआ तो वो किचन का वर्क एंड ये सब करके जब वो अपनी क्लासेस ले रही थी, ऑल ऑफ सडन मैंने उनको कॉल किया और उनकी आवाज बड़ी उदास सी मेरे को महसूस हुई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हो गया? कहती हैं कि कुछ नहीं यार, बस जिंदगी में ना किसी के लिए सुकून नहीं है। मैंने कहा सुकून नहीं है, क्या हो गया?
अब नॉर्मली कोई और इंसान को अगर हम बात करते हैं तो हमें बोलते हैं कि कुछ नहीं वैसे ही है वो, बट मेरा उनके साथ थोड़ा सा अच्छा रिलेशन है, तो उन्होंने ऐसे बोला यार पता नहीं आज सुबह ऐसे चाय पी रही थी और पीते पीते ऐसे दिल में ख्याल आया और मैं एकदम से हंस पड़ी। क्यों? क्योंकि दो रीजन थे। एक, वो चिड़िया के दुख में अपने दुख को जो महसूस कर रही थी और अपनी चीजों को जो महसूस कर रही थी, वो इतनी ज्यादा खो गई थी कि वो ये भूल गई थी कि, क्योंकि उन्होंने उन बातों में ये भी बोला था कि बेचारी चिड़िया अगर नीचे गिर गई तो, अगर उसको लग गई तो, उस बात पे मैं हंस पड़ी और मैंने एकदम से बोला, मैंने कहा चिड़िया क्यों गिरेगी, और अगर चिड़िया गिर गई तो वो उड़ना जानती है, वो फिर से उड़ जाएगी। और फिर वो हंस के बोली, अरे ये तो मैं भूल ही गई थी कि चिड़िया को उड़ना भी आता है। तो और घोंसले का टूटने का और अंडे के टूटने का जो उनको दर्द था, वो धीरे धीरे अपने आप उसका वो आंसर देने लग गई कि हाँ घोंसला तो वो बनाती रहती है, वो खुद बना लेगी, फिर से बना लेगी, फिर कुछ कर लेगी। तो हम ओवर थिंकिंग में, हम उस टेंशन में उन बातों पे आ जाते हैं कि हम एक्चुअल रियलिटी भूल जाते हैं। और जब हम एक्चुअल रियलिटी भूल जाते हैं, हम उस प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाते। तो अगर हमें लगता है ना ज्यादा सोच से हम डिसीजन अच्छा लेंगे, कभी कभी वो ज्यादा सोच हमें बहुत ज्यादा अपसेट कर देती है, जिससे हमारा डिसीजन तो सही होता है, लेकिन वो नेगेटिविटी जो हम लेकर चल रहे हैं वो हमारे उस डिसीजन को डगमगा देती है। सो दैट्स अ बिगेस्ट वॉल, दैट्स अ ट्रैप। वो वो चीजें हैं जो हम खुद ही खो जाते हैं। तो आप सबको मैं एक छोटी सी एक्टिविटी देना चाहूंगी, 2 मिनट के लिए, और इवनली चलो मैं छोटा सा थोड़ा सा कर देती हूँ, 1 मिनट के लिए सिर्फ अपनी आंखें बंद करिए और वो आंखें बंद करके सिर्फ ये काउंट करिए कि कितने थॉट्स हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। आपको उस थॉट्स को डिटेल में नहीं सोचना है, सिर्फ आंखें बंद करके ये सोचना है कि कितने थॉट्स आ रहे हैं। और वो थॉट्स आपके फैमिली के लिए भी हो सकते हैं, वो थॉट्स आपके जॉब को रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो थॉट्स आपके बच्चे के रिलेटेड, बच्चे के फ्यूचर के रिलेटेड भी हो सकते हैं, या वो थॉट्स किसी भी कोई वस्तु के लिए भी हो सकते हैं। कोई ऐसी चीज जो एकदम से आपके दिमाग में, कुछ मोबाइल हो गया या कोई और डिवाइस हो गया, पेंसिल हो गई, एनीथिंग। सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको आंखें बंद करके वो सारे ख्यालों को गिनना है जो अभी आपकी आंखों के आगे बंद आंखों के थ्रू जो आ रहे हैं। सिर्फ उसको आप काउंट करें। मैं फिर से कहूंगी, आपको उन थॉट्स को डिटेल में जाकर डाइव इन नहीं करना है, उसमें तैरना नहीं है, सिर्फ उन थॉट्स को काउंट करना है। घर का एक थॉट आया, 1। ऑफिस का थॉट आया, 2। स्कूल का काम करना था, 3। ये चाहिए था, 4। सिर्फ काउंटिंग करनी है। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, और अगर क्या थॉट्स आपकी आंखों में आए, क्या थॉट्स आपके दिमाग में आए, क्या थॉट्स अपने आपको आपने काउंट करे, उसके आप नंबर लिख सकते हैं। ओके, so I can speak and I will do it, don't worry. So I will mix the both languages, don't worry about it. Okay, so what you will do, what you will do when you counted that thoughts. Okay, I was asking that how many thoughts you have seen, आपने कितने thoughts देखे, how many thoughts you have counted, you have think about it, just write down in the chat. अपने चैट बॉक्स पे आप वो थॉट्स लिख सकते हैं कि अगर 3 आए, 2 आए, नॉन स्टॉप बहुत सारे आए, या किसी को कुछ भी नहीं आया था। सो अगर आप चाहे उस पे आप लिख सकते हैं, जिससे कहते हैं मुझे पता चलेगा कि आपने वो एक्टिविटी करी है नहीं करी। वेरी गुड, 10, 12। ओके, सो नाउ जब ये सारे थॉट्स आए, अब
इस गेम में, इस एक्टिविटी में, आई विल टेल यू स्मॉल थिंग. व्हाट वाज द स्मॉल थिंग इज, व्हेन आई हैव टोल्ड यू कि ओके अपनी आईज क्लोज कर लीजिए, अपनी आंखें आप बंद कर लीजिए, you have a thinking about that thought. When I said about the home, about the office, about the school, all of a sudden that thought started ping on it. Yes or no? वो जो थॉट्स थे वो मेरे बोलने के साथ साथ चेंज हो रहे थे, या वो थॉट्स अपने ही वे में जा रहे थे? आप अगर चाहें तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं. 90% लोगों का ये मानना है, और साइंटिफिकली प्रूवन भी है, कि हमारे थॉट्स हमारे ट्रिगर वर्ड से आते हैं. When I listen to anything, when I listen any word, when I listen anything, which if it's emotionally in touch with me, so that thought will start coming. और वो ख्याल जो मेरे दिमाग में आएंगे, वो दूसरे ट्रिगर पे अचानक से चेंज भी हो जाएंगे. सो वो सब चीजें जो हमारे दिमाग में है, वो सिर्फ आपके कंट्रोल में नहीं है, वो दूसरे के ट्रिगर वर्ड पे भी डिपेंड करती है. सो अगर मैं आपको आज पूरे सेशन में ये कहूं कि यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स, नो, यू कांट कंट्रोल योर थॉट्स. आई नो आप कहीं ना कहीं कहोगे कि यू नो दिस साइकोलॉजिस्ट सेइंग समथिंग डिफरेंट, बट दैट्स समवेयर इट्स रियलिटी. You can't control your thoughts, but yes, you can change your thoughts. You can with that trigger word, you can change that feeling. As I just want to say, the another thing is, as I said, that the biggest wall you have gotten climb is the one you build in your mind. हमारे दिमाग में जो हम सबसे बड़ी वॉल बनाते हैं, वो हमारी खुद की होती है. और वो खुद की हम कैसे बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सेड दैट मदर. अब मदर को जानते ही सबसे पहला दिमाग में क्या वर्ड आता है, क्या फीलिंग आती है? माइट बी लव, केयरिंग, हेल्पिंग, लिसनिंग, दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स. अचानक से वो मदर की फिगर, हेट्रेट, टेंशन, ये ऐसे में आ जाए, तो हमारे लिए वॉल क्या हो जाएगा? हर रिश्ता ऐसा है. और उसके बाद कोई कुछ भी कर रहा है तो हम कहेंगे हर रिश्ता ऐसा है, और हम अपने आप अपनी वॉल को डेवलप करे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे दिल में जो एक्सपेक्टेशन थी उससे किसी ने मैच नहीं किया, तो हमारी वो वॉल अपने आप डेवलप होती जा रही है. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से, दैट ओवर थिंकिंग इज बेसिकली दैट व्हाट वी आर क्रिएटिंग इन आवर ओन माइंड. So, what are the symptoms of the overthinking? Is difficulty in concentrating. Because if I'm into my daydreaming, मैं अपने ही ख्यालों में सोच रही हूँ, तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी. मेरे सामने से कुछ हो रहा है, मुझे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अपने ही ख्यालों में हूँ. Restlessness, I will get more, restlessness. That why it's happening, why it's doing it like this, and all that thing. Feeling constantly on edge, irritating, a sense of dread, right? Whereas physically, I'm feeling tiredness, dizziness, I'm feeling very sleepy, body pain rahegi, you are feeling very upset. So these all are the symptoms which is physically and mentally are affecting us. So when we come into, as I told you, that overthinking is basically if we are having a fear and worry regarding anything, वो fear और worry combined हो जाएगी हमारी overthinking के साथ, और वो हमारे उसमें develop करेगी बहुत ज़्यादा anxiety और stress. So this all become a trap, and this trap will make you more worried. So now, when we say that negative thinking patterns to be changed, but before that, I really want that you have to understand that what is a negative thinking and why this negative thinking is developing. ये negative thinking develop क्यों हो रही है? हमारी गलती की वजह से हो रही है, जो हम अपने लोगों के साथ चैनलाइज और ट्रिगर कर रहे हैं. I like to explain you before explaining you this slide. जब हम बात करते हैं आजकल के जमाने की, जब हम कहते हैं पहले तो नहीं होती थी ये मेंटल हेल्थ इशू, दिस मेंटल हेल्थ इशू वाज नॉट अर्लियर बिफोर.
अब क्यों ज्यादा बढ़ने लग गई है, अब क्यों ये चीजें इतनी डेवलप होने लग गई हैं, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ओसीडी और द अदर मेंटल हेल्थ इश्यू. It depend on us that how we develop the other new generation. आजकल कंपैरिजन बहुत ज्यादा है. 100 out of 100 नहीं ला रहे हो, प्रॉब्लम है. अगर 98 आ रहे हैं तो 100 क्यों नहीं आए, कॉलेज वो वाले कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी. अगर हमने इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक रख दिया कि अगर 100 आएंगे तो ही हमें खुश होना है. अगर आपका टारगेट 87 का था और अगर 86 आ गए, वो एक नंबर नहीं आए. हमने अपने ब्रेन को इतना ऐसा डेवलप, ऐसा ट्रेन कर लिया, वी हैव ट्रेन एंड वी हैव डेवलप दैट ब्रेन दैट we are not able to find out our happiness without a reason. We are not able to find out. Tell me one reason where you feel more happy. You can write it down. Tell me any one reason where you say that, okay, I'm happy and I don't require anybody in this world. We don't find it. Mobile hai, then we are happy. Internet is not working, I'm unhappy. My due to this COVID, we are stuck at home, I'm unhappy. I'm going out, I'm happy. But earlier when I was going out and there was a lots of traffic jam, so then I was unhappy. क्योंकि हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और दूसरों को भी हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं. उसकी वजह से हमारे अंदर ये मेंटल हेल्थ इश्यूज या ओवर थिंकिंग ज्यादा डेवलप हो रही. दूसरे ने, मैंने खाना अच्छा बनाया, दूसरे ने तारीफ नहीं करी, आई एम अनहैप्पी. many ladies come, many people come and they say, मैं इतना कुछ करती हूँ, मेरी तारीफ नहीं करते, nobody appreciate me. I said, why you require that appreciation? Ma'am, but everybody required it. Yes, everybody required it. But why they required? I tell you one thing. Today I'm doing a webinar with you all, right? So I'm not saying that you appreciate without knowing it, but generally many times it happen in a webinar when we get a lots of thank you as well, lots of appreciation as well, but we are not happy with that reply. If I have that mindset that okay, मुझे वो वाला reply चाहिए था, and many people do that. So when we make the target of it, so वो target achieve करने में हमारी वो ओवर थिंकिंग वो हमें अपसेट कर देती है, वो हमारे नेगेटिव थॉट्स को डेवलप कर देती है. सो जब ये चीजें डेवलप होती हैं, ये नेगेटिव थिंकिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रक्चर वेयर आई कम टू दिस स्लाइड. ऑल और नथिंग, एवरीबडी हैज टू परफेक्ट, वेयर एल्स इट्स अ फेलियर. अगर ये है मेरे पास, आई एम हैप्पी. इफ मेरे पास नहीं है तो मैं दुखी हूँ. Christopher was saying, sorry, Catastrophics, where I am I'm not getting that 87%, or I got 86, or I got not 100, I got 90, 99. I'm upset. There was a one child who came to me and she was into a severe depression because she was expecting that 98% she will get, but she was got something about 97 point something, which was round figure was not 98, and she felt so depressed, she felt so guilty कि मैम मैंने वो मेहनत कर ली होती है ना तो मेरे को वो 98 मिल जाते. I got that college. So we are into that negative thoughts developing about it, minimizing. अगर ये गेम मैंने जीत तो ली, लेकिन कोई और भी जीत सकता था, मैंने क्या डिफरेंट किया, लेकिन आपने खुद को अप्रिशिएट तो किया क्या? नहीं, हमने तो उसको मिनिमाइज कर दिया. खाना तो हर कोई बना लेता है, बच्चे भी संभाल लेता है, होम मेकर्स करती क्या है, हमने किया क्या? ये डायलॉग्स आपको रेगुलरली सुनने को मिलते होंगे और हम सुनकर अनसुना कर देते हैं, बट ये कहीं ना कहीं ये नेगेटिव थॉट्स डेवलप करने के एक कारण होते हैं. दीज आर द रीजंस टू डेवलप दैट नेगेटिव थॉट्स. जंपिंग टू कंक्लूजन,
as you're just listening to me, or I just telling you I'm just telling you something about overthinking, and I'll say, yeah, ये जो ना webinar ऐसे ही होगा. It's not working out. Whereas I overgeneralize and onto a conclusion about it. So that is also wrong, where I get personalized. If somebody else is smiling on the other side, and I will say, मेरे बारे में ही बात कर रही है, देखा वो देख मेरे को देखकर ही हंस रहे हैं, इनको मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, they are making a fun of me. Negative self label. I am not, I am worthless, I can't do anything. And these all things we all develop during our childhood. These all things we develop during our childhood. I hope that you all are clear with me, you are all understood and clear with the thoughts. So now just give a minute to yourself. And while giving this minute to yourself, think of it. When I think about it, make me feel sad. क्या चीज है जो आपको उदास कर देती है, आपको डराती है और आपको खुश कर देती है? I start from myself. I am happy when I am, get my me time. Frankly speaking, I am happy when I get my me time. That 5 minutes, my me time, I really enjoyed it. Where I listen my favorite music, I read my book, or I, just sit down on my garden and I just enjoy that birds and I enjoy that nature. So that is my happy moment. Now, while listening to this, might be many people have that thought, अच्छा family के साथ खुश नहीं होते हो या ये नहीं होते हो? No, I'm happy with everything. But yes, that's a happy moment for me because it's making me relax. So that is my happy moment. Now, when I get scared, yes, I get scared when I see when I get these kinds of cases where I can't do anything. I got helpless. Where I like to share one small incident with you all as well. I'm blessed with a baby. During that time, one of my uh, some case came to me with from my family member, and I really got very scared. Why? It was because that small child was undergoing through the brain tumor surgeries, and he was only 40 days old, and he suffered from brain tumor. It really made me scared, and I can't do anything as a counselor. I can't tell the parents that don't get upset. I can't tell the parents that be positive, where I know that that child has suffered so much. So that made me scared, where I feel that I can't do anything, I'm helpless in it. Yes, that is there, and I accept it. And yes, why when I get sad, I get sad when I am not get my time with my kids. I don't get the time with my family member as well. Many times I got busy with my other work, that I don't get that time as well. So I get little bit upset, or if I don't get my me time. So that is somewhere I really feel upset. So now everyone, you all have to like, you can share with me, what's your trigger, or if you don't want to share, that's perfectly okay. But you really want to know that what are your points. Might be you are scared from the death, might be you are scared from going out, might be you are scared from interacting the people. What's your scared trigger? So because now with this activity, if you get to know that what's your trigger point when you get scared or when you get sad, you will able to change that thinking process. And that's the best activity you can do it. हम हमेशा कहते हैं पता नहीं मैं उदास क्यों हूं, बट उदास हूं। कुछ ऐसा वर्ड या ऐसा समथिंग कुछ होता है जिसकी वजह से हम उदास होते हैं। यस, अगर वो एक सेवियर डिसऑर्डर में नहीं है, डिजीज में नहीं है, लेकिन अगर आप बिना उसके भी उदास हैं, तो कुछ ऐसा है या किसी ने आपको कुछ ऐसा बोला है जो आपके दिल को लग गई है, एंड यू आर फीलिंग स्केर्ड एंड यू आर फीलिंग अपसेट. So if you like to share your perspective, you can do that.
And till now, if you are so fast, so good, you all are able to understand what I am explaining to you, you can just write it down, yes, or understood. You can just let me know, because that's the only way we can communicate between in this webinar, and that really help it out. So now, the another slide where I want to talk about, don't get trigger. Now what about the trigger? आप कहोगे मैम आप बोल रहे हो but it's not possible. Yes, it's possible. Like for example, I till now I've told everything in this webinar to you, and now all of a sudden I will say, ये जो एस राशि वाले होते हैं ना, they are not doing anything. मतलब वो कोई काम नहीं करते, they are worthless, they can't do anything. So now when you are listening to me, many people will say in the middle, why this ma'am is talking about against the S name people, and somebody will start get upset. Will somebody will start telling ki why you are doing it, right? On the other way, if I know ki okay, it's only a webinar, it's only her it's only her opinion, it's not about me. So आप वहीं पर channelize कर लोगे. जब आप personalize लोगे, like for example, I give you another example. I wore this suit, I wore this kurta, and all of a sudden you will say, ma'am, this color doesn't like to you. आप अच्छे नहीं लग रहे, you don't looking good. And all of a sudden when I say, okay, अच्छा, all right, I will just check it out. अच्छा ठीक है, कुछ नहीं होता. Or otherwise, no issue, but I like this color. Now, how to respond, that's your choice. अपना remote control अपने पास रखिए. You have to keep your remote control with you. Don't give this remote control to anybody else. You are giving this remote control to everyone, but don't know how to handle your own thoughts. So don't get triggered. The people don't give that, okay, as Diwali is coming. So there's a one thing, if you all know it, रावण को राम जी ना मार पाते अगर उनके विभीषण उनके ब्रदर ने वो राज ना खोल दिया होता, वो सीक्रेट ना बता दिया होता, दैट हाउ दिस रावण कैन बी डाई. सो द सेम वे यू हैव टोल्ड योर वीकनेस कि अगर मेरी तारीफ नहीं होगी तो मैं उदास होंगी. If you will not appreciate me, I will get upset. And as the other person has that control, and you have presented a good food, and you just very happy and you expected that the person will appreciate you. You kept the food, and the person said, "ठीक है, okay," or might be unnoticed your food, and you get, "Oh my God, I am nothing. Nobody likes my work. Nobody appreciate me," and I get upset. And slowly and gradually, I start telling myself that you are the worst person in the world. So now what happened? Somebody else have that remote control in your for your, and they have just controlled the button upset, and you got upset. Somebody said angry, and you start angry. So find your trigger words. Take out that words which make you trigger. If somebody will say me that you are not a good mom, might be this word is triggering for me, or might be I say okay, not an issue, I'm not a good mom, that's okay, because I'm not reacting. If I'm not reacting to that thing, so the other person will say ki, okay, this person is not getting reacted towards this is the biggest statement for any person. If I say that you are not a good mom and I'm not getting triggered, I'm okay with it. So the other person finally will get to know, okay, this person remote control is not with me. I'm a good mom or not. That's my thing. That's between my kid and between me. I don't have to get certification by anybody else. That's simple. So don't get triggered by anybody else. Take your that trigger words from them.
change your remote control. Next time, if that person is using that word, tell yourself that I will not get triggered. And that's okay. And that's perfectly good. Now, many times the people say कि मैम उस बात पे मैं गुस्सा नहीं होती हूँ, मैं उसके आगे तो जवाब दे देती हूँ. Yes, you answer to that person at that particular moment, but later on you are thinking about it that why this person said this word to me, why this person is thinking about me like this. That's the same way you are triggering it and you are developing that thought. आपने वो thought develop तो कर लिया ना. बात वहां पर आती है कि अगर मैं चेंज कर दूं जहां मैं सोचूं ही नहीं. If somebody said that you are not a good mom, okay, and if after that when I am playing with my kids and everyone, I'm happy because I know what's the relation between me and my kids. I don't require the certification by anybody else. So that is what I want to explain. So only growth thoughts in your brain which you will mind putting in the vase, which can be decorated. Don't put the negative thoughts. Look to that slide. That orange flower is looking so beautiful, and that is worth it. And you are worth it in your life. आपने जो किया है अपनी लाइफ में वो आपके लिए इम्पोर्टेंट था. वो आपका डिसीजन था, वो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, एंड यू डिड द बेस्ट जॉब. सो बी पॉजिटिव. टेल योरसेल्फ, don't suppress your thoughts. And the another thing which I really like to tell in this be positive. Many people advise that be busy. आप busy रहोगे तो कभी negative thought disturb ही नहीं करेगी. I'm little bit different in this. When you are busy, you are just suppressing your thoughts. It's as same as in the bucket, full of the water is full with that bucket, एंड आप ऑल ऑफ द सडन वो मग को उल्टा करके उसको प्रेस कर रहे, यू प्रेसिंग इट हार्डली, एंड एज यू प्रेशर मूव दैट that mug comes up and say bum. The same way it happened in the COVID situation when people were busy, so from morning to the night they are going, they are traveling, they are going to an office, they are working so hard. All of a sudden this lockdown announced, when people was now sitting at home and nothing to do because they can't go out, they have no other work to do it. How much you will cook, how much you will clean your house. So now that thought started coming up, and then there's a lots of anxiety, lots of depression, lots of stress started developing. So busy doesn't mean that you have to suppress your thoughts. अपने आप को इतना बिजी कर लो कि रात को नींद आ गई और कब उठ गए, कब भागा दौड़ी स्टार्ट हो गई. दैट्स नॉट से टू बी गेट बिजी. Busy means, yes, make yourself busy in some productive work. It can be a mindfulness exercise, it can be anything which you like it. So that's your own busy schedule. But many people who comes and who talk to me during this COVID time, they give the 20, 30 years, 50 years old story. And when I said that, why you are thinking of these stories, they said, मैम बड़े टाइम से सोची नहीं थी, अब दिमाग में आ गई. सोची इसलिए नहीं थी. और जब मैं उनसे पूछती थी ना कि अच्छा आप करते क्या है, मैम at 6 o'clock I get up, I go for a gym, I do this, I do that, and till 12 o'clock I come at home and I don't get the time to think of it as well. Now due to this COVID I start thinking about it. वो thoughts मैम मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ, because आपने अभी तक उसे suppress किया था. तो after 50 years or after 20 years that pressure developed have removed, and that pressure came bump. So the way is that, yes, make your negative thought into a positive, but don't make yourself so much busy that you are only suppressing that thought. Yes, be thankful and grateful to yourself. खुद के लिए खुद की तारीफ करिए.
And frankly speaking, many times I pat myself. I say, "Oh, well done. I really did the great job," and I do that because that was my patience, that was my level, that was level which I have crossed across. So that was my passionate level. So whereas now there's another activity which you all do it and share your views if you can do that. Make believe you have saved your laughter for a time of need. When will you want to be have heard it? आपने अपने जार में वो हंसी दबाकर रख ली कि जब टाइम मिलेगा ना तो हंसूंगी। तो अब वो सिचुएशन सोचो कि वो कौन सी सिचुएशन आएगी जब आप वो हंसी को खोलोगे, वो स्माइल को खोलोगे। थिंक ऑफ इट। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, थिंक ऑफ। क्योंकि आजकल हम सब लोग यही कर रहे हैं, कंजूसी से हंस रहे हैं, कंजूसी से जिंदगी जी रहे हैं, तो सिर्फ भाग रहे हैं। वी आर जस्ट रनिंग, वी आर नॉट enjoying it, and we are making our young ones also developing the same habit. And after that, when I got that MD job, I will get that MD job and I will smile. I will be happiest person. And when you get that MD job, then many things are just removed up. So to overcome with this overthinking, the first thing, the other things, yes, you can start, but today just acknowledge it and just tell yourself, अभी का अभी मुझे हंसना है, इस चीज को अभी enjoy करना है. Find the gratefulness into it. Right, the parents are not appreciating you, the your spouse is not appreciating you, but you ever appreciate yourself. Start hugging you tightly and see yourself that I love myself. I am dark, I am white, I am short or I am long, whatsoever, but I am happy. I am happy what I am. And I am happy if I will be happy. So I have to enjoy it the fullest. So do that and try to do it. If you like to share, you can tell me. That might be if you have thought any thought like this, so you can just search it out and find it. वो हंसी के वो मौके कब आप लेकर आएंगे अपनी जिंदगी में? नाउ बहुत मुश्किल होता है जब हम ओवर थिंकिंग की जब हम बात करते हैं, बिकॉज ये वो दलदल है जहां पर हम अगर पहुंच गए तो हम खुद को निकालना नहीं चाहते. आई लाइक टू शेयर अ स्मॉल इंसिडेंट हियर. There was a small child, not small, but yes, in 17 or 16 years old, this child was into lots of overthinking. So in this overthinking, she came to me, she counseled by the other counselors as well. When she came to me, she said that, ma'am, from 4 years I'm into this overthinking. मैं बैठी होती हूँ, मैं अपने ख्यालों में होती हूँ, but मैं जानती हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ. मैं जानती हूँ कि मुझे उठ के पढ़ना है, मुझे करना है, but I'm not able to come out with this. And she said, मैम मैंने योगा भी कर लिया, मैंने माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस भी कर ली, मैं अपने आप को बिजी भी रखती हूँ, आई हैव अ लॉट्स ऑफ ट्यूशंस एंड एवरीथिंग. बट देन आल्सो मैं ट्यूशन में मैम की सुन रही हूँ एंड आई एम जस्ट लिसनिंग टू टीचर, बट आई एम इनटू माय ओन थॉट प्रोसेस and I'm not able to overcome it. So when this thing happened, I frankly I just find out what things I have done with her. First is I found out her trigger words. That what's her trigger words? What the fear and the scaredness that she is getting that word. And after that trigger word, and after getting to know that reason that why it's happening, then I tried this activity with the person, and it really worked. You have to catch that thought, that trigger word, that thought which is disturbing you. That can be anything. अगर मेरी जॉब चली जाएगी तो क्या होगा? Many people lose their job and they have that fear as well. And many people who are
suffering from that struggle. The seniors are really disturbing them and everything, and they are saying, ma'am, agar मैंने कुछ कहा तो job चली जाएगी. That job will be no more with me. So that's only overthinking. Yes, if you will say something in a bad manner, so then you will get a bad result. But अगर आप उसके और कोई solution ढूंढ ले, like for example, your senior is really disturbing you or creating little bit mess. Find a solution. How can you talk to the person? Don't complain the person. Complain मत करो. But generally उनको, you can tell them, you can acknowledge it that, sir, I have these work and I have to complete this and then I will continue doing this. And then check it out. What are the reasons of that thought? What is making you scared? And then change it. If that job gone as well, so what? It doesn't mean that the people not getting a job. The people are getting a job. So the people, if the people are getting job or the yes, finding a job due to this COVID, it's very tough. But if the person is getting it, it's not that the marketing not hiring any jobs. Yes, they are giving it. So then you can change it. But the first thing is, क्यों job चाहिए? You are capable, you have did your hard work. Why the person take your job? Appreciate yourself in that way, that I am capable, and if that person leave give tell me to resign it, so that's their loss. They don't know how much they lost in their company, because I was a hardworking and I was doing the best job. But you have ever appreciated? आप तो खुद से ही तरस खा रहे हैं. You are only feeling pittiness for yourself. Take out that pettiness away from you and appreciate yourself. Tell yourself that yes, you are worth it. And now these are the three exercises which you can do it, and very good exercises to control the overthinking. One is with this button, these called the collarbones, which we call the collarbones, and the another one is your tummy navel side. You just make it circular. One is the anti-clockwise and the other one is the clockwise, or you can just make it move like this. Both way it can work it out. The second one is make your ear touch with it. Now, how you have to touch it with it? Now you have to touch with your thumbs on the upper side and then press it up, because this is called a thinking cap. This activity channelize your, if you are very much into a stress and if you do it in this way, it press all the buttons or press all the points which little bit connected, or actually 90% is connected to your brain only. So it really gives you a very good effect. And if lots of thoughts are coming and you don't know how to control it, this finger exercise, that's really great. It gives a result within a minute. And the people who are having a sleeping pattern, sleeping not able to sleep properly, or disturbance in the sleep, they can do this activity or the another activity which I will just tell you in a minute. So till that you can try this activities. And apart from this, just do a simple activity. Many times if some thoughts comes in my mind as well, what I do, I take a normal breath from the nose and breathe out from the mouth. Inhale from the nose, exhale from the mouth. So journaling, just take a normal breath. Don't have to change the pattern. Don't go into the deep breath and everything. Just lie down on the bed and take a normal breath and out. In, out. In, out. And you can try. Just try for 1 minute and you will see that change. It automatically make your your thought process control, because brain also get confused. I'm taking a breath now, what this new pattern came. And as the brain is start concentrating on this breathing exercise, your that thought started
stop down, and your that stress lower down, and then you feel that sleepiness. And till now, in my 14 years of experience, I've seen that in doing this exercise 20 times, basically many people in the 10 times also, they start feeling drowsiness and the sleepiness. In 20 times also, they start feeling so sleepy that they are not able to control. And during a session also, when they do it, they start saying that, ma'am, our eyes have started feeling sleepy at this particular moment also. So it's a very good it's a very good exercise to control your thoughts and to channelize yourself into a productive way. So now the another activity, as I told you in the starting of the session, I can change your overthinking. Only the few things you have to do. So first thing, yes, you have to find your trigger word. And you have to find that words which make you find that things which make you scared or which make you sad. And apart from this, you have to check it out, change it, and that's all. Now, write here. You can make your own dots. Now, in that thoughts, you can put your own positive words. I will not say positive affirmations. Only the positive words which it's your connected to you. So, where affirmation, if you want to write, take one sheet and write it down in your in that sheet, that any positive affirmation, paste it in that room. And now whenever in that thought process, that positive affirmation will automatically change your negative thought process. So you can do only both the ways. Now I will not connect that positive affirmation to the law of attraction and the other things. Frankly speaking, I don't get into that science, but yes, positive affirmation is just like a reminder for you. Many people who comes with severe overthinking, they are just thinking from so long, they're not able to do it. So what I do, I tell them to make a poster. So I that poster, what they make it, and the one statement, what triggered them to change that negative thought, they have to paste in that room or some cupboard area or something where that person can see that image. The second, everybody is having a mobile nowadays. Make it a screen, wall screen, wallpaper on the screen, or on your desktop or on your laptop. If you're having it, you can make it a wallpaper. So whenever you are opening it, that image is visible to you. So now that image will stay in your mind so long that when you are into that overthinking of process, automatically that image will come and trigger you that no, you are not into that job, you have to remove it. Like for example, I'll just give you an example. If I say daag achhe hain, so which advertisement you remember by listening this statement? You can write in the chat what statement you what product name it comes in your mind when I say daag achhe hain. Or if I say the another word is डर के आगे जीत है. So what kind of advertisement comes in your mind? डर के आगे जीत है. Yes. So now you don't have seen that advertisement while remembering it, that someday this webinar happen and Shweta will be asking you and you know the answer. You have listened so much, so automatically when this statement I said, so that word, that advertisement came in your mind. So that is all about when you will put some affirmation for yourself.
And when that information will be there in front of you in the form of image, that image automatically, when you develop that, that you will see, and you will start developing that, you will your that overthinking, your negative thoughts start coming down, and you will get to know that picture. Okay, yes, I don't want to think. So that is the one thing. Whereas Tabassum, regarding your studies, what you are talking about, I will just come in 5 minutes. About actually, I just like to tell you the one thing what you can do is this activity. The another thing is, or anybody. Whereas nowadays online teaching is really very tough for the children as well and for the teachers as well. Children are not able to concentrate, and teachers are 24 hours are doing in that job. So it's a very tough thing, and we are losing the interest. We are not able to concentrate, in the studies. So here I give you a few tips for the people also who lose the interest. One is, make a target, a small targets in your life. Like for example, I normally do with my children that I first ask that what percentage you want to get in your, in which class you are studying, on what percentage. Like if they say that, okay, I want to get 34, or I want to get 84, or I want to get 100, so it's their choice, because every person is individual and everybody have their own choice. So now they have to write the percentage. Now with the every subject, write that what numbers you will get to get that percentage. So now, like for example, in English, if I will get 60s, so I will not able to achieve my 90%. So that for that, I need to write the appropriate word, number, through which I can calculate that, okay, the same percentage is coming up. So that is a detail, you are making a planning. So now when you are writing it down, okay, in maths, I want a 70%. And now you know that, okay, I'm getting 70 in maths, but in other subjects, I have to get more than 90 to get the good number. So that's your thing. And now you know, okay, 70. So now I am capable to get the 50. So now how to achieve that 20%, that's make you yourself a trigger to work on it. It will give you that pump up, that it will say that, okay, now you have to work it out. That's the first thing. The second is, why you are losing the interest. Something which is making you demotivated, might be some your earlier expectation which got broken it out, or something is there. So you have to find out that solution. You have to find out that solution while acknowledging that problem. So first find out that problem, that what's the problem where you lose interest and you are not willing to study, right? Now, as you said, in the life also, if you have lose interest, so what did happen in your life? Do you, it's depend on you, that if it's depend that, okay, I'm not getting a good partner, I am not got that job, that's why मेरी लाइफ कुछ है ही नहीं. अगर ये वाला थॉट प्रोसेस है, अगर यही चीज है, सो sorry to say, then you have to change your thoughts, because nothing is predictable, nothing is there which is written down, and you will say that, okay, if I want to become this person, and then only I will able to survive. So find out the trigger words where in this, if you can tell me more about it, or I can help it out, or we can work separately regarding this. And regarding when we talk about the daydreaming and the overthinking, I just like to tell you one thing, dear. Overthinking, it's many times, get as equal as a daydream. Many people who just daydream, they're thinking about any situation and they are developing it. And in overthinking, we just get that thought and we are developing it. So a very minute difference between daydreaming and overthinking. And as I told you, you have to find the trigger.
Now that trigger will help you out to channelize that it's a daydreaming or it's a overthinking. Now, how come? Like overthinking always comes when we are into a worry or into a stress, as I said in the starting of the session. Daydreaming can be anything. Like if I want to become a psychologist and I daydream that, okay, I become a psychologist, and after becoming a psychologist, I will give this kinds of webinars and the people will appreciate me and all that thing. So it's a kind of daydreaming, which I am in the future, what will happen might be good or might be bad. It's I'm just thinking over it, right? And on the other way, I am in overthinking. I am thinking in that way where is said to be little bit where I will say that into a negative form. That's a one. The another one, as I told you in the starting, that overthinking is a positive as well. But in daydreaming, I am totally lost into my dreams, what I want to become and all that thing. Overthinking, I know my what's presence is coming in my mind, what's going on and everything, but then also I'm not unable to control my thought process. So these are the few differences where you can channelize your daydreaming and overthinking. But both ways, if it's over, don't making your concentration down. It's really affecting you. So you have to take care of it. So, till yet, any other questions if you want to ask, any other doubts you are having it, you can ask to me. So, basically, as I am saying that stop giving that remote control, to somebody else. Control yourself. Handle your own triggers. Handle your own happiness. Don't feel that दूसरे चेंज हो जाए, क्योंकि दूसरे ये चाहते हैं कि आप बदल जाए, और इन दोनों के बदलने की राज में हम अपनी जिंदगी जीना भूल गए। सो दूसरे जो कर रहे हैं वो उनका थॉट प्रोसेस है, आप जो कर रहे हैं वो आपका है। सही और गलत हमारी खुद की डेफिनेशन है। सो जो आप कर रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, फाइंड दैट सॉल्यूशन आउट, बट यस विदाउट हर्टिंग एनीबॉडी यू कैन वर्क इट आउट एज वेल। Okay. So till yet, any other questions if you want to ask, you can do that. Thanks to everyone also patiently listening to me. Sir and ma'am, do you have any question? मैम कोई क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पर। Okay. So, anybody, if you like to say something, you can write it down to sir, and I will get to know, and then we can talk about it. Where Tabassum, if you also like to talk to sir, do I'm saying it? You can, we can work it out in that mails as well. Yes, Mahesh sir. यस मैम। Yeah. So you can share your views, and then we can. ओके जयश्री मैम, जयश्री मैम, थैंक यू मैम। आपने जो सेशन लिया उसमें जो एक्सरसाइज ली थी वो बहुत ही बेनिफिशियल थी, और कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम सेशन के बीच आ रहा था जो कि लैंग्वेज के लिए कुछ लोगों के अंदर मैं देख रहा था कि चैटिंग में कुछ उनके भी इधर थोड़ा व्यू पॉइंट अलग दिख रहा था। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ जो कुछ सेशन है उसमें आपने जिस प्रकार की किसी ने लैंग्वेज इस्तेमाल की है कि वो कृपया आगे कर इस प्रकार की लैंग्वेजेस इस्तेमाल ना करे, क्योंकि जो कोई भी हमारे साथ जुड़ रहा है वो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान से ही है। ऐसा नहीं है कि उसे हिंदी आनी चाहिए या अंग्रेजी आनी चाहिए, वो किसी भी भाषा में बोलने का उसे अधिकार है और वो उसकी भाषा का सम्मान करता है। और इस प्रकार के जो कुछ आपने
मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा आपका, मगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। और ओवरऑल जो सेशन था, उस सेशन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जिस प्रकार मैं तो बहुत दिनों से आपके इस सेशन के लिए वेटिंग कर रहा था कि पीछे हमने एक बार बुलाया था, मगर उस वक्त नेट का प्रॉब्लम आ गया था मैम, और आप इतने बिजी शेड्यूल में थे कि फिर से हम सेशन के लिए कुछ ट्राई नहीं कर पाए। और थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें इतना सारा वक्त दिया और हमें इस विषय पे बहुमूल्य मार्गदर्शन किया। थैंक यू सो मच मैम। और थैंक यू सो thanks for all participants. Thank you. थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।